Hello and welcome to Awaaz FM. This is a special feature program on the Mosque Cathedral in Cordoba, Spain. In July 2022, the Awaaz FM team visited the 10th century site, and this is our version of the history of the Mosque Cathedral in Cordoba. We hope you enjoy your documentary and look forward to all your comments. Awaaz FM की तरफ से आप सब लोगों को खुशामदीद। यह है एक ख़ासूसी फीचर प्रोग्राम मॉस्क और कैथेड्रल के बारे में, यानी कि मस्जिद और गिरजा, जो कि स्पेन के शहर कोर्डोबा में है। आवाज़ टीम ने 10वीं सदी के मकाम का दौरा किया और ये कोर्डोबा में मस्जिद कैथेड्रल की तारीख का हमारा वर्जन है। हमें उम्मीद है कि ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आएगी और आपके कमेंट्स और फीडबैक के मुंतज़िर हैं। The Patio de los Naranjos is a large outer courtyard where you can rest from the Cordoba sun before entering inside the other sections of the mosque. Patio de los Naranjos एक बड़ा बैरूनी सैन है जहां आप मस्जिद के दूसरे हिस्सों में दाखिल होने से पहले कोर्डोबा के सख्त सूरज से आराम करने के लिए बैठ सकते हैं। The Mezquita Mosque dates back to the 10th century when Cordoba reached its zenith under a new emir, Abdul Rahman III, who was one of the greatest rulers of Islamic history. At this time, Cordoba was the largest, most prosperous cities of Europe, outshining Byzantine and Baghdad in science, culture and the arts. The development of the Great Mosque paralleled these new heights of splendor. मस्जिद 10वीं सदी की है जब कोर्डोबा एक नए अमीर की तहत अपने अरूज पर पहुंचाए अब्दुल रहमान तीसरा, जो कि इस्लामी तरीक़ के अजीम हुक्मरान में से एक थे। उस वक्त कोर्डोबा यूरोप का सबसे बड़ा खुशहाल शहर था, जो साइंस, शफ़क़त और फ़नून में बाइज़ेंटाइन और बगदाद को पीछे छोड़ता था। अजीम मस्जिद की तरक्की में शान और शौकत की नई बुलंदियों को मतवाज़ा किया। Today, the Mezquita de Cordoba, or the Cordoba Mosque as it is commonly known, or the Cordoba Cathedral as it was known by the owners of the Catholic Church, can be visited throughout the year for an entrance fee. Following a dispute between the church and the city over the name of the building in the early 2000s, it is now diplomatically called Cordoba Mosque Cathedral. आज मस्जिद या कोर्डोबा मस्जिद जैसे इसको आम तौर पर जाना जाता है, या फिर कोर्डोबा कैथेड्रल जैसे कि कैथलिक चर्च के नाम से जाना जाता था, दाखिले के फीस के लिए साल भर जा सकते हैं। अमरात के नाम पर चर्च और शहर के दरमियान तनाज़े के बाद अब इसको कोर्डोबा मस्जिद कैथेड्रल कहा जाता है। The approach is via the Patio de los Naranjos, a classic Islamic ablutions courtyard which preserves both its orange trees and the fountains. When the mosque was used for Muslim prayer, all 19 naves were open to this courtyard, allowing the rows of interior columns to appear like an extension of the tree with brilliant shafts of sunlight filtering through. दाखिले का रास्ता पैटियो के लॉस नारंजोस से होता है। यह है एक क्लासिकल इस्लामी वुज़ू का सैन जो अपने संतरे के दरख्तों और चश्मों दोनों को महफूज रखता है। जब मस्जिद को मुसलमानों की नमाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उस सैन के तमाम 19 दरवाजे खुले थे, जिससे अंदरूनी कॉलमों की कतारी दरख्त के तवस्सी की तरह दिखाई देते थे, जिसमें सूरज की रोशनी की चमकदार शफ़क़तें गुजरती थी।
Okay, so let's have a look at the arches. A first glimpse is immensely exciting. Jan Morris described it as so near the desert in its tent-like forest of supporting pillars. The architect introduced another horseshoe-shaped arc above the lower pillars. The second and purely aesthetic innovation was to alternate brick and stone in the arches, creating the red and white stripe pattern which gives a unity and distinctive character to the whole design. There are more than 850 colored granite, jasper and marble pillars in total. Sunlight streams in from windows in the four cupolas, creating interesting effects combined with artificial light from the thousands of small oil lights. तो आइए एक नज़र आर्चेस पर डालते हैं। जैन नॉरिस ने इसे शहद के करीब अपने खीमे नामा जिंगल में सहारा देने वाले सतूनों के तौर पर बयान किया। आर्किटेक्ट ने नीचे वाले पिलर्स पर एक और मेहराब मुतरफ करवाई जिससे सुर्ख और सफ़ेद धारीदार पैटर्न बनता है जो डिज़ाइन के एक मखसूस किरदार देता है। कुल 850 से ज़्यादा रंगीन पिलर्स हैं। खिड़कियों की सूरज की रोशनी आती है जो छोटे तेल की रोशनियों के साथ मिलकर दिलचस्प इशरात पैदा करती है। Now let's take a look at the mihrab. This traditionally has two functions in Islamic worship. First, it indicated the direction of Mecca, therefore the direction of prayer, and it also amplified the words of the Imam, the prayer leader. At Cordoba, it is particularly magnificent. The shell-shaped ceiling is carved from a single block of marble and the chambers on either side are decorated with exquisite Byzantine mosaics of gold. The worn flagstones indicate where pilgrims crouched on their knees, and the Cordoba Mosque mihrab looks south in the same way as the Damascus Mosque and not southeast in the direction of Mecca. अब चलते हैं मेहराब की तरफ। इस्लामी कबायत में रवायत के तौर पर इसके दो काम हैं। पहला ये कि मक्के की तरफ इशारा और दूसरा इमाम के अल्फाज को बुलंद किया। कोर्डोबा में ये ख़ास तौर पर शानदार है। कोर्डोबा मस्जिद के मेहराब दमास्कस की तरफ नज़र आता है जबकि जनूब मशरिक यानी मक्का की तरफ होना चाहिए जो कि नहीं है। Now let's take a look at the cathedral. In the center of the mosque squats a cathedral which dates back to the early 16th century, while to the left is the Capilla di Viva Vicosa, built by Moorish craftsmen in 1371. The mosque was consecrated as a Christian cathedral in the same year that Córdoba was reconquered in 1236. Alfonso X built the Viva Vicosa chapel with stunning multi-lobed arches. The Capilla Real, or the Royal Chapel, was also built as a pantheon for Christian kings. आइए अब चलते हैं, एक नज़र डालते हैं कैथेड्रल के ऊपर। मस्जिद के बीच में एक कैथेड्रल है जो 16वीं सदी का अवायद का है, जबकि बाएं तरफ सन 1371 में तामीर की गई कपिला दी विला विकासियो है। मस्जिद इसी साल एक गिरजा बन गई जब सन 1236 में कोर्डोबा को दोबारा फतह किया गया था। अल्फोंसो ने तामीर के शानदार मेहराबों के साथ चैपल और ख़ास तौर पर ईसाई बादशाहों के लिए जगह शामिल की। In the 14th century, Enrique II rebuilt the royal chapel in Mujtahid style. In 1523, with the support of King Carlos V, the church built a huge nave inside the mosque. The cathedral was elaborated on over the years by many of the country's leading architects and artists. Architect Hernan Ruz continued working transforming the cathedral into Gothic style. चौदहवीं सदी में बादशाह एनरिक ने शाही चैपल को मुजरायर के अंदाज में दोबारा तामीर किया। सन 1523 में बादशाह कार्लोस के तावन से
चर्च ने मस्जिद के अंदर एक बहुत बड़ा नाव बनाया। कैथेड्रल के अमरात कई सालों तक ममारों के ज़रिए जारी रहे, जिसमें हरनान रूस भी शामिल हैं, जिन्होंने इसे गोथिक अंदाज में तब्दील किया। A look now at the bell tower. The Tour de Alima is 93 meters high and was built on the site of the original minaret. It's possible to climb the steps to the very top for superb views of Cordoba. बेल टावर पर अब एक नज़र। टोर दे अल मीनार 93 मीटर बुलंद है और इसे असल मीनार की जगह पर बनाया गया था। जब आप सीढ़ियों चढ़कर ऊपर जाएंगे तो आपको कोर्डोबा के शानदार नज़ारे नजर आएंगे। A look now at the entrance gates. There, 3 main decorated gates dating back to Moorish construction. On the east, the enlargement by Almanza featured poorer reproductions of earlier gates. La Paloma door was reformed in Gothic style in the 15th century. और आखिर में दाखिले दरवाजे पर एक नज़र। मोरिश की तामीर से मुतल्लिक 3 मरकज़ी सजावट वाले दरवाजे हैं, जबकि मशरिक में अल मज़र की तवस्सी में पहले के दरवाज़ों की नकलें हैं। ला पालोमा दरवाज़ों के 15वीं सदी में गोथिक अंदाज में तब्दील किया गया था। This program has been produced by Awaaz Community Radio. We hope you enjoyed this program and look forward to your comments. ये प्रोग्राम आपके लिए आवाज़ कम्युनिटी रेडियो की तरफ से पेश किया गया। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आपके कमेंट्स और सजेशंस के मुंतज़िर हैं।